वास्को एका भौशीक कार्यावळी वेळार गौतम खट्टर हांणी सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केले. ताच्या विधाना उपरांत पुराय गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. ह्या विधाना खातीर धार्मीक भावना दुखयिल्ल्याचो आरोप करीत ताच्या आड जायत्या पुलीस स्टेशनांनी कागाळ दाखल करून पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्लो. उपरांत 24 तारखेक हिमाचल पुलिसांनी खट्टराक कुल्लू जिल्ल्यांत ताब्यात घेतिल्लो. 26 एप्रिलाक ताका गोंय पुलिशेच्या सुवादीन करून ताका रितसर अटक केल्ली. ताचे उपरांत गौतमान 29 एप्रिलाक वास्कोच्या प्रथम वर्ग न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ताच्या जामीन अर्जाचेर बिरेस्तारा 30 एप्रिलाक सुनावणी पुराय जाली. मात कोर्टान ताचो निकाल शेनवारा राखून दवरिल्लो. खट्टराच्या जामीन अर्जावयलो निकाल शेनवारा सकाळच्या सत्रांत अपेक्षीत आसलो. मात न्यायालयान तो राखून दवरून 2.5 वरांचेर जाहीर केलो. सकाळ सावनूच न्यायालयाच्या भायर लोकांची गर्दी आशिल्ली. निमणे न्यायालयान आपलो निर्णय जाहीर करीत गौतम खट्टराचो सशर्त जामीन मंजूर केलो. न्यायालयान जामीन मंजूर करताना ताका 15,000 रुपयांची हमी आनी हेर कांय अटी घातल्यात. म्हाका खूब बरें दिसलें बेल ऑप्शन ग्रांट जाली, कित्याक थोडे हार्ड वर्क आसता पळय तो इट पेस आफ्टर यू गेट एन ऑर्डर. आमचें काम आमी केल्लेंच. आमी बेल फायल केली 29 30 ती आमी आर्ग्युमेंटां दवरिल्ली आनी आज ताजो रिमांड कम ऑर्डर्स आशिल्ले. सकाळीं मॅडमीन थोडी क्लॅरिफिकेशन्स घेतली आमचे कडल्यान. इंटरवेन्शनूय आयिल्लें, सो इंटरव्युनरा कडल्यानूय आर्ग्युमेंट्स जाले. आनीक सांजची आतां ऑर्डरीक आशिल्ली. आतां ऑर्डर अलाव जाल्या. बेल एप्लिकेशन 15,000ची 2 शुअरिटी सांगल्यात. थोडी कंडिशन्स कोर्टान इम्पोज केल्या आनीक तातूंत बेल एप्लिकेशन किती कंडिशन्स आसा सर ती? 15,000च्यो 2 शुअरिटीज सांगल्यात. गौतमाचे 2 रिलेटिव्साचे लोकल नंबर्स आनी एड्रेसीस दिवपाक लायल्या आनी ताका नॉट टू लीव द कंट्री सांगल्या आनीक नॉट टू रिपीट ऑफेंसीस अशी म्हणजे कंडिशन आसा. गौतम खट्टर जी को आज न्यायालय से बेल मिला है, जमानत मिली है, तो ये हमारे एडवोकेट अमेय प्रभु देसाई जी और उनकी पूरी टीम, अन्य एडवोकेट सबका जो है सामूहिक प्रयास है. उन्होंने सत्य की, न्याय की बात को न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय ने जैसे हमेशा सदा से, सदियों से, आदि अनादि से सत्य की जीत होती आई है, धर्म की जीत होती आई है, न्याय हमेशा मिला है सत्य को, तो आज भी गोवा में ऐसा ही हुआ है. जब राम और रावण का युद्ध था तब भी धर्म की जीत हुई थी. जब कंस और कृष्ण का युद्ध था तब भी धर्म की जीत हुई थी. और आज भी ये धर्म की जीत हुई है, ये सत्य की जीत हुई है. और हम गोवा के लोगों का हृदय से आभारी हैं. गोवा एक सनातन परंपरा का, सांस्कृतिक परंपरा का प्रदेश है जहाँ ये सब फलती और फूलती है. परशुराम जी की भूमि है, लव और कुश की भूमि है, ये गाय की भूमि है, ये आस्था की भूमि है, ये विश्वास की भूमि है. तो ऐसी भूमि को हम नमन करते हैं और गोवा के मुद्दों के साथ, गोवा के सनातन के साथ, संरक्षण के साथ, गाय के साथ हम सदैव साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे. और हम यहाँ पर सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया इस धर्म युद्ध में, इस न्याय युद्ध में, इस सत्य के युद्ध में. या निकाला खातीर सध्या या वादाचेर तात्पुरतो फुल स्टॉप पडला. तरी ह्या प्रकरणात गुन्हे फाट्याच्या चौकशे कडेन सगळ्यांची नदर आसा. For allowing me to step in this entire intervention application. One thing is certain that yes, bail is granted. That's not the end of it. He has to face the trial. Nothing that is going to go beyond trial. One thing is clear that we are going to assist the prosecution throughout, and justice is going to be done. It is the fact that yes, the sentiments of Goans at large have been hurted. But right now, since the bail is granted, no further comments. But one thing, there are also complaints against the organizers, which are also going to be taken up by us. And we have to see that yes, there has been abatement in this offence. We are going to take the legal recourse towards the fag end. And of course, organizers, the complaint, we will take the right way of. Well, this case, what has happened right now, it's on the end of our investigation. I like to thank the Honorable Judge for taking the right decision, giving a bail. It's acceptable sometimes. You cannot win all the time. But yes, I know and I'm very sure at the end, the victory will be ours. We want justice, that these kind of incidents don't happen again. We want justice for our Christian community as we are peace-loving people. So, I like to thank our honorable lawyer, Advocate Fiola, and also Advocate Melvin for coming and helping us with this particular intervention which you put right now. But I'm sure the further investigation, whatever is going to happen in the future now,
we will know the right track is being followed. We know that we are winning again because we have the right evidence as well. And God is with us. That's the main thing. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.